So glossopharyngeal nerve, ninth cranial nerve, nerve of the third arch, mixed nerve. We are writing the functional component का table बना रहे. Okay. In the functional component, the first is special visceral efferent. This component is always for the muscles developing from pharyngeal arch. तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ pharyngeal arch muscles. ये component उनके लिए होता है. So which pharyngeal arch muscle? Third pharyngeal arch muscle. What is that muscle? Stylopharyngeus. Stylopharyngeus muscle. एक मसल को सप्लाई करती है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, क्रेनियल नर्व. एक फालतू मसल को सप्लाई करने के लिए ऊपर से नीचे आती है, इसको बोलते हैं प्रेम. प्रेम अंधा होता है ना, वैसा. क्रेनियल नर्व, उसका स्टैंडर्ड क्या है? मलबार हिल में रहती है. लेकिन स्टाइलोफेरेंजियस धारावी के इंटीरियर में, नाले के ऊपर के झोपड़ी में रहने वाला स्टाइलोफेरेंजियस से प्रेम हो गया, उसको क्या करेगा? ये फाइबर्स किससे आएंगे? ग्लॉसोफेरेंजियस का तो खुद का न्यूक्लियस भी नहीं है. हाँ, मैं सुइसाइड कर सकता हूँ अभी बाहर से, अभी भी उधर जाली नहीं लगा है. हाँ, न्यूक्लियस एम्बिगस, न्यूक्लियस एम्बिगस. Same thing we will be for 10th nerve. It will be supplying muscles of palate. 10th and 11th cranial accessory. It will be supplying muscles of palate, muscles of larynx, nucleus ambiguous. उनके सबके fibers. Nucleus ambiguous will supply muscles of palate, stylopharyngeus पहले, फिर इसके बाद muscles of palate. तो ये glossopharyngeal में खाली stylopharyngeus. हाँ, 10th में muscles of palate, muscles of larynx, pharynx, cranial accessory. 10 और 11 में. बट यहाँ पे स्पेशल विसरल इफरेंट, जनरल विसरल इफरेंट. जनरल विसरल इफरेंट क्या है? हाँ, क्या है जनरल विसरल इफरेंट? पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो. पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो. पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो. मेरे को 9:15 को कुछ भी करके खत्म करना है. पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो, यही एक डिफिकल्ट चीज है. पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो. देन इसका न्यूक्लियस, इसका एरिया ऑफ सप्लाई विल बी पैरोटिड ग्लैंड. पैरोटिड ग्लैंड. इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस. फेशियल नर्व में यहाँ पे क्या आएगा? सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस. ग्लैंड कौन सी आएगी? सबमैंडिबल. मैडम सिखाएगी कल ना, सैटरडे. Special visceral afferent. This is for taste. This is for taste. Taste के लिए एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटोरियस. This is for posterior 1/3 of tongue. Posterior 1/3 of tongue. Posterior 1/3 of tongue. Okay. तमन्ना किधर है? Posterior 1/3 of tongue. General visceral afferent. General visceral afferent. Okay. This also is from nucleus of tractus solitorius, and this is for the pharynx का सेंसरी. pharynx का सेंसरी. pharynx इज अ विसेरा ना, तो उसका जनरल विसरल एफरेंट. ओके. इसके अलावा कुछ भी लिखा रहता है बुक में, जनरल सोमैटिक एफरेंट फॉर द स्टाइलोफेरेंजियस का प्रोप्रियोसेप्शन, वो भी रहेगा. आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट सो डिटेल्स. तो यार ये तो इजी है. ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व को याद रखना, 2 स्पेशल 2 जनरल, दोनों विसरल. बराबर है कि नहीं?
course of any cranial nerve, course of any cranial nerve has to be described like this. Firstly nucleus, then intraneural course, then brainstem पे कहाँ पे appear होता है, then intracranial course, then foramen कौन सा है, which foramen it comes out, and then extracranial course, extracranial course, and then branches. क्योंकि मेरे पास 10 मिनट है अभी, I'm just going to go fast. Intraneural course. Now इंट्रान्यूरल कोर्स के लिए फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये अपीयर कहाँ पे होती है ब्रेनस्टेम में. ये कौन सा फिशर है मेडुला का, एंटीरोलैटरल फिशर, यहाँ से आती है 12th. ये कौन सा फिशर है, हाँ पोस्टीरोलैटरल 9, 10, 11. ये क्या है ऑलिव, ये क्या है, तो मतलब ऑलिव के लैटरली आएगी. तो अभी जब मैं इसका जब इंट्रा न्यूरल कोर्स निकाल रहा हूँ ना, सो फर्स्टली आई विल हैव टू ड्रॉ द सेम. किसने ड्रॉ किया रे डायग्राम, मैंने अभी ड्रॉ किया था, हाँ गंगा प्रसाद. इस पागल ने तेरे को बोलना वापस निकालना पड़ता है. पिरामिड, ऑलिव, ओके, पोस्टीरोलैटरल फिशर. तो आपका नेक्स्ट टाइम ये कभी ड्रॉ करोगे तो ये भी पोस्टीरोलैटरल फिशर भी दिखना चाहिए. तो ये नर्व यहाँ से आ रही है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस निकाल रहा हूँ मैं. कौन सा न्यूक्लियस है, एम्बिगस. फिर ये कौन सा न्यूक्लियस है, ट्रैक्टस सोलिटोरियस. जस्ट देखो मीडियल है, लैटरल है. फिर यहाँ पे एक न्यूक्लियस निकाला मैं, न्यूक्लियस इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस. इनके सबसे फाइबर लेके, सो इंट्रान्यूरल कोर्स में क्या लिखोगे, फाइबर्स रन लैटरल टू ऑलिवरी न्यूक्लियस इनसाइड द ब्रेनस्टेम इन मेडुला. ये हो गया एक लाइन. क्या लाइन लिखोगे, इंट्रान्यूरल कोर्स में फाइबर्स रन lateral to olivary, inferior olivary nucleus, inferior olivary nucleus. nucleus क्या लिखोगे, nucleus ambiguous plus nucleus of tractus solitarius plus inferior salivatory nucleus. इनके सबसे लिखेंगे lateral to inferior olivary nucleus. ब्रेनस्टेम पे कहाँ पे अपीयर होगी, तू हाँ बरं लग पटकन भरायचं. आता माझं डोकं सटकलंय, कुठे अपीयर होईल, हा तुझ्या बाजूचा मुलगा, तुझं नाव काय, क्या नाम है, समाधान. कुठून आहे, कुठे अपीयर होती, ग्लॉसोफॅरिंजियल नाव, बाजूचा मुलगा आर्यन. कुठे अपीयर होती, बाजूचा मुलगा, बाजूचा मुलगा, बाजूचा मुलगा. ए मागे विचार, बस खाली. बाजूच किधर है, पोस्टीरियर लैटरल फिशर. 6 लोग साथ में बोलो, किधर अपीयर होती है, पोस्टीरियर लैटरल फिशर. बसा तुम्ही 6 जण खाली बसा. तू उभा राहा. पोस्टीरियर लॅटरल फिशर ऑफ काय, तू नाही, तू हा कशा, कुठली पोस्टीरियर लॅटरल फिशर, हा विचार त्याला, विचार परत विचार. हा ऑफ मेडुला, पोस्टीरियर लॅटरल फिशर ऑफ मेडुला. मग इंट्राक्रॅनियल कोर्स, इट गोज लॅटरली. क्या बात है, इसके लिए ताली बजा रही है. लैटरली, इट गोज लैटरली. कौन से फोरामेन में से बाहर आती हो, कौन सा फोरामेन, जुगुलर फोरामेन. नाउ वी टॉक अबाउट द एक्स्ट्रा cranial course. Extracranial course
जुगुलर फोरामेन में से बाहर आएगी, जुगुलर फोरामेन में से बाहर आएगी, एंटर्स कैरोटिड शीट, कैरोटिड शीट में एंटर करेगी। चारों क्रेनियल नर्व्स कैरोटिड शीट के अंदर होते, लोअर 4, उसमें से वेगस कंटिन्यू करती है, बाकी 3 छोड़ के जाते हैं। ओके, सो उसके बाद ये नर्व passes between internal carotid artery and external carotid artery. Okay, internal carotid artery and external carotid artery. फिर आपने उसको कहाँ देखा था? अंदर टर्न करेगी तो then it passes between superior constrictor of pharynx and middle constrictor of pharynx. Ends by giving terminal branches. Ends by giving branches. चलो, ब्रांचेस उसके बहुत है, बट जो टर्मिनल ब्रांचेस है वो है लिंगुअल एंड टॉन्सिलर। अभिजीत, SCMC का है, passes between SC and MC and middle crest. कौन है? कौन देख रहा था? अरे थाम जरा सा, थाम। कल्पना, इमरजेंसी क्या है? बुला रहे, 5 मिनट में छोड़ रहा हूँ, कुछ तो इम्पोर्टेंट सिखा रहे हैं। सो इट गिव्स, दिस गिव्स 6 branches. Glossopharyngeal nerve gives 6 branches. 6 branches. कौन से 6 branches? CT scan. Then CT में फर्स्ट इज टिम्पैनिक ब्रांच। ये टिम्पैनिक ब्रांच मिडल ईयर को सप्लाई करती है, मिडल ईयर को सप्लाई करती है। मिडल ईयर कितना हम लोग मिडल ईयर पे क्या होता है उसके ऊपर, मिडल ईयर के ऊपर टेगमेंट टिम्पैनी, टेगमेंट टिम्पैनी के ऊपर उसमें विच पार्ट, अंकस टेम्पोरल लोब। पीछे क्या होता है? मास्टर्ड एंट्रम। लैटरली क्या होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। आगे क्या होता है? कैनाल फॉर टेंसर टिम्पैनी एंड मिडली क्या होता है? स्केला वेस्टिबुला, फेनेस्ट्रा वेस्टिबुला एंड फेनेस्ट्रा। काय नाव काय तुझं बाळा? नाव काय तुझं? हां, चारुलता. तुझ्या शाळेला, तुझ्या आई वडिलांना शत नमन. कॅरोटिड ब्रांच, कॅरोटिड ब्रांच, कॅरोटिड ब्रांच. बाळांनो, मला काय पडलेली नाही आहे तुम्हाला एवढं तळमळीने शिकवायची. पोर्शन सगळा संपलेला आहे माझं. मला पण भूक लागली, माझं ब्रेकफास्ट खाल्लेला नाही असं वाटतं. जरा तुम्ही पण लक्ष देऊन मी जे शिकवतोय ते रिवाइज करायचे टॉपिक्स. TC, लास्ट ब्रांचेस क्या बोले हमने? LNT, अटल सेतू, लिंगुअल आणि टॉन्सिलर. लिंगुअल विल सप्लाय पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग, बरोबर? लिंगुअल टॉन्सिलर. PM मोदींनी LNT चा अटल सेतू पिक्चर देखा था ना,
अटल सेतु पे पीएम चल रहे हैं. PM, pharyngeal branch. This and muscular will be for stylopharyngeus. Okay, CT किंवा TC, PM, LND, 6 ब्रँचेस आणि शेवटचा पॉइंट अप्लाइड एनाटॉमी. गॅग रिफ्लेक्स क्या है? व्हाट इज गॅग रिफ्लेक्स? दिशा, व्हाट इज गॅग रिफ्लेक्स? Yeah, so from Panvel, the anatomy can join. That's okay. That you ask her if she doesn't want to miss call, so that option is there. And ओके, सॉरी किधर था मैं? गैग रिफ्लेक्स. व्हाट इज गैग रिफ्लेक्स? If you touch the posterior wall of the pharynx, तो पेशेंट ENT वालों के पास गए, उसने कभी टंग डिप्रेसर से आपको ऐसा ही किया, एक मिनट हुआ है क्या? किसी के साथ ऐसा हुआ है? हाथ ऊपर करो. मैं ही एड़ा है क्या? हाँ चलो हमें तो गैग रिफ्लेक्स मीन्स पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स को. अभी यहाँ पे ग्लॉसोफेरिंजियल लॉस्ट सेंसेशन, तुम पोस्टीरियर वॉल को ऐसा करो, टच करो, तो फेरिंग्स नॉर्मली कंस्ट्रिक्टर्स ऐसे कंस्ट्रिक्ट होते हैं, उसके कारण हमको ऐसा होता है. अगर कोई टंग डिप्रेस करे ज़्यादा टाइम तो योर गैग रिफ्लेक्स विल बी लॉस्ट. ओके सर, क्या ख्याल है आपका? बंद किया जाए?